Good evening and welcome. Welcome to Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meet. And today is Wednesday, so we are here with a new topic on Wednesday meeting. And the topic for today is the spiritual law of cause and effect. So in the last two sessions, we have seen about the spiritual law of divine oneness, and we have seen the law of appearance. So anything that you want to share on that, anything you want to ask? And then we move on with the topic today, law of cause and effect. Yes, and it's very, very important because it's just a precursor of the Buddha Purnima. So Lord Buddha's teaching is also in the line of cause and effect, karma. Yes, so we can definitely learn a lot from these teachings. We will have some good discussion into the topic today. But before that, let me have some sharings. So what is opening up? Any questions from the last few sessions, and anything in general you want to share on the topic today? What is your understanding of law of cause and effect? You can call that law of karma. You can call that spiritual law of giving and receiving. Whatever you want to, whatever is your understanding, you can share from there. Meanwhile, let me just welcome the people around. So welcome Harshi, welcome Anirudh, welcome Seema ji, Sushil Jain ji, Jyoti ji. Yes. Who would like to share your understanding of the law of cause and effect? And of course, any questions that you have from the last two sessions that we did. Yes, Sanjeev, go ahead. In simple small word, जैसा करोगे वैसा भरो. Perfect. जैसा करोगे वैसा भरो. Yes. So whatever is your karma, that is exactly what you will get as a result. तो वैसे इसको बोलते हैं कर्म और भाग्य भी बोलते हैं ना. तो भाग्य और कुछ नहीं है, आपका कर्म का फल है. तो भाग्य is nothing but the result of your karmas. So the karma on the return path is your fate, destiny, luck, भाग्य, जो भी आप बोलना चाहो. Yes, good understanding, very good. जैसा बोगे वैसा पाओगे. What you see, what you sow the seed, that is exactly what you're going to reap the crop or the tree. Yes, anybody else who has some understanding, different understanding or different perspective of the same understanding? कौन बोलना चाहेंगे? And if you're comfortable, you should switch on the video so that we can connect with each other. Yes, I think all of us have been here before. सारे लोग हमारे पुराने ग्रुप से हैं. Yes, कोई नया गेस्ट नहीं है आज, so that is fine. Yes, so who would like to share what your doubts, your understanding, whatever you want to share, please go ahead. Amit ji, Anirudh ji, Harsh, Seema ji. Yes, this is very common. Everybody understands it, I know. All of us have some kind of understanding. Yes, Anirudh ji, go ahead. सर ये संजीव जी ने बिल्कुल जो कहा है ठीक कहा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे. मैं इसको एक दूसरे एंगल से भी देख रहा हूँ कि कोई भी जो अफेक्ट होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है उसका काज जरूर होता है. अगर कोई काज होता है, उसका कोई भी प्रॉब्लम या अफेक्ट है लाइफ में, उसका काज जरूर होता है. कोई ना कोई काज, अगर उसको ध्यान से देखोगे तो कोई ना कोई काज मिलेगा, और उसको ढूंढोगे तो काज खत्म भी हो जाएगा. और कोई काज आता है लाइफ में तो उसका अफेक्ट कुछ ना कुछ जरूर होता है. तो बोथ आर रिलेटेड. बहुत बढ़िया, वेरी गुड अनिरुद्ध जी, बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है. So this is actually the essence of cause and effect. If you are seeing any effect in your life, there has to be a cause. And if you go back, if there is a universe, then you have to believe that there is a Big Bang. उसका effect अगर universe है तो उसका एक cause होगा, तो आप उसे Big Bang बोलो या ओम का vibration बोलो, है ना. तो something has been created, so obviously that is an effect. So there is a cause. तो law of cause and effect basically means अगर आपकी लाइफ में कोई इफेक्ट है तो उसका कॉज जरूर होगा, और अगर कोई कॉज हुआ है तो उसका इफेक्ट जरूर आएगा. अब वो चाहे इस लाइफ में आए या अगले लाइफ में आए, वो अलग बात है. इस लाइफ फॉर्म में आपने जो किया वो अगले जन्म में आ सकता है, अगले लाइफ फॉर्म में मिल सकता है, और इस लाइफ
मिल रहा है वो हो सकता है आपने पिछले लाइफ फॉर्म में किया हुआ हो, करेक्ट? सो देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ रीबर्थ एंड मेनी अदर थिंग्स दैट कैन come into the picture, but absolutely right understanding. अगर इफेक्ट है तो कॉज होगा, और अगर कॉज है तो इफेक्ट आएगा ही आएगा. Very good understanding, Anuj. Good. Makes a lot of things clear to all the people. Anybody else who wants to add something different? Law of karma, law of cause and effect, law of giving and receiving. It's also more or less the same. जो आप दोगे वही आपको घूम फिर के वापस आएगा. What goes around comes back, comes around, right? So you are starting the cycle of circle. जो दोगे वो घूम फिर के वापस आपके पास आएगा. And when we talk of karma, we should understand we are talking of karma at all the basic levels, which means your thoughts. It starts with your thought, then it becomes your word, and then gets into the deed. The thoughts, words, and deeds, all this is karma. Yes. तो जो कर्मा आप क्रिएट कर रहे हैं एंड रेडिएट कर रहे हैं, जो एनर्जी आपने क्रिएट करी as a jiva, you create some energy, yes, by thoughts, words, and actions. And then when you radiate that to the outside world, that is your karma. Correct? So energy created by you and radiated outside you is karma. And on the return journey, whatever is coming back, that is your destiny. So you are actually writing your destiny with your karma. We can say that? Yes. Yes, Apurva ji, you raise your hand. Please go ahead. सर मैं थोड़ा सा जंप करना चाहता हूँ. आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट the cause and effect is a very common and well understood law, but when the universe started, what was the cause of the start of the universe? So scientifically, we all know the universe, how did it start? We all say Big Bang. तो यूनिवर्स का तो कॉज है बिग बैंग का. अगर आप बोलोगे बिग बैंग का क्या कॉज है? Yes, that's the question. That is the question, right? I understand that, because then you are questioning of the divine nature. तो डिविनिटी के लिए हम बोलते हैं only the divine is the causeless cause, है ना? यूनिवर्स में जो कुछ है उसका कॉज एंड इफेक्ट होगा, बट कोई चीज ऐसी भी है जो कॉज एंड इफेक्ट के परे है, उसको बोलते हैं कॉजलेस कॉज, एंड वी कॉल दैट डिवाइन. डिवाइन को जिस मर्जी नाम से बोल लो. अब शिव पुराण में उसको लॉर्ड शिवा के नाम से जानते हैं. यस. So Shiva is a silent field, we say that, and a vibration in that field created the Shakti, the universe. विष्णु पुराण के हिसाब से बोलेंगे तो विष्णु को कॉजलेस कॉज माना गया है, करेक्ट? उसके बाद यूनिवर्स क्रिएट हुआ, तो हम उसको छोड़ देते हैं, डिवाइन कॉज को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो कॉजलेस कॉज की बात है, वहां पे डिस्कशन नहीं होगी. डिस्कशन होगी जो यूनिवर्स में हो रहा है, जहाँ पे हम बैठे हैं, तो कॉज एंड इफेक्ट की बात कर सकते हैं. एंड दिस ऑल दिस इज व्हाटएवर इज देयर इन द यूनिवर्स इज कवर्ड बाय कॉज एंड इफेक्ट. Yes. तो we as a जीवा are a result of cause and effect. Yes. हमारी बॉडी क्रिएट हुई है, अगर इफेक्ट है ये तो इसका कॉज होगा, बिल्कुल होगा. अब जेनेटिक्स में जा सकते हैं, पेरेंटल लाइनेज में जा सकते हैं. आप पैदा हुए क्यों? क्योंकि आपके माँ बाप पैदा हुए, उनके बाद आप पैदा हुए, तो डिसेंडेंट हुआ, करेक्ट? तो बॉडी उसी हिसाब से क्रिएट हुई है. तो यू एज ए जीवा आर कमिंग हियर बिकॉज ऑफ ए कॉज एंड इफेक्ट. So let us understand from there. Whatever you see in the outside world is an effect. और अगर वो इफेक्ट है तो उसको एक कॉज होगा, जरूर होगा. जैसे अनिरुद्ध जी ने बताया, इफेक्ट है तो कॉज होना ही है. अब वो हम पहचान पाए, जान पाए या नहीं, वो अलग बात है, बट अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए. इफ देयर इज एन इफेक्ट, देयर हैज टू बी ए कॉज, एंड इफ यू आर क्रिएटिंग ए कॉज, देयर विल बी एन इफेक्ट. यू कांट एस्केप फ्रॉम दैट, और वो आएगा ही आएगा आपके पास. जितना मर्जी छुप जाओ, जहां मर्जी भाग जाओ, आपके कर्मों का फल आपको मिलना ही है, right? So that is the understanding, and of course very well intelligent question by Apurva ji. Let's acknowledge. Yes. और एक क्वेश्चन है. Yes. हाँ जी बोलिए सर. ये कॉज एंड इफेक्ट जो हम बोलते हैं, उसमें हम कॉज के बारे में एक मान लेते हैं कि एक कॉज है, और वो कॉज हम मानते हैं. इट इज आवर बिलीफ दैट इज द कॉज.
but that may not be the cause, something else may be the cause. Yeah. तो ऐसे situation में how do we relate to it? आज हमको एक लगा कि ये cause है, कल लगा कि नहीं दूसरा cause है. Our actions will differ from the belief that today was one cause, tomorrow is another cause. So same effect we are attributing to one cause today and to another cause tomorrow. So our actions will differ based on those attribution. So how do we overcome such situation? Okay. Yeah. Okay, my internet is showing is a little unstable. So who would like to answer that? Anybody? Anybody? Sanjeev, Amitji, you have an answer to that question? Sorry, I don't know if you can repeat the question. I was just responding to a message. इफेक्ट के बारे में अगर आपकी कॉज की अंडरस्टैंडिंग कल कुछ थी, आज कुछ है और कल कुछ और होगी, तो अकॉर्डिंगली योर एक्शंस विल बी डिफरेंट. Yes? Yes, obviously yes. So in one line, if you want to answer, it would be, everybody can hear me, I suppose? Yes, audible. Yeah. So it is the right understanding which is the key. So everything has to come from right understanding. If you don't have a right understanding, you will be operating from wrong understanding. You will make some mistakes, and then eventually you will learn from your learning graph and then improve upon it. Then you will come to the right understanding. तो अगर आपके belief सही नहीं है, मतलब ultimate truth नहीं है. Correct? So if you think that whatever is your belief, that I am a victim, suppose a victim is living a life and he believes I am a victim and he thinks the whole world is a villain. Is he right in his belief? It is absolutely true. उसकी लाइफ में सिर्फ villains है. उसको लग रहा है सब उसको मारने के लिए आ रहे हैं. तो वो विक्टिम है और उसको विलन दिख रहे हैं. ये रियलिटी है, पर ये ट्रूथ नहीं है. जैसे जैसे उसकी अंडरस्टैंडिंग चेंज ट्यूशन के साथ, वैसे वैसे उसके लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इंप्रूव होगी, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज होगी, वो खुद ट्रांसफॉर्म होगा, उसके बिलीफ ट्रांसफॉर्म होंगे, एंड ही विल मूव ऑन द पाथ ऑफ इवोल्यूशन एंड स्पिरिचुअल जर्नी विल गो अहेड. तो अंडरस्टैंडिंग ही तो हमको सही करनी है. दैट इज व्हाट द स्पिरिचुअल जर्नी इज ऑल अबाउट. ओके, सो डिड आई आंसर यू, अपूर्वा जी? Yes, yes. Okay. Sure. सुशील जैन जी है रेज्ड हैंड. देवेश जी अभी आ रहा हूँ आपके पास. मीनवाइल अनिरुद्ध जी है रेज्ड हैंड. अनिरुद्ध जी प्लीज गो अहेड. सर ये जो इनका क्वेश्चन था, मेरा उसके बारे में सोचना है. बोलिए. हेलो, की वीडियो अटक. am I audible? Am I audible? हाँ. शशि उनकी वीडियो अटक गई है शायद. हाँ. Okay, कोई बात नहीं. freeze We will हो come गई है. to सुशील जैन जी. सुशील जैन जी हैं, आपने हैंड रेज किया था. सुशील जैन जी प्लीज गो अहेड. ओके, देवेश जी गो अहेड. हेलो. हाँ, एक मिनट होल्ड कीजिए सर. अभी देवेश जी के पास पहुंच गया हूँ मैं. ओके देवेश जी. जी, यू वांट टू शेयर समथिंग? सर पहले सुशील जैन जी को ले लीजिए, वो अभी एक्टिव है, फिर मैं आ जाता हूँ. अभी आप Please. बोलिए सर. अभी आप आ गए हैं तो बोल दीजिए. हाँ. अच्छा. सर मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है इस क्वेश्चन को लेके ये है कि जो हमारा जो कॉज है, इट इज मल्टीपल पैरामीटर फंक्शन है ना. जबकि हम जब भी कॉज को एनालाइज करते हैं, इफेक्ट को एनालाइज करते हुए कॉज पर पहुंचते हैं, तो हम एक प्रीडोमिनेंट फोर्स को एनालाइज करते हैं कि ये हो रहा है हमारी लाइफ में, तो इसका जो इफेक्ट है ये होगा. जबकि जो माइनर जो इफेक्ट्स होते हैं हम उसको नेग्लेक्ट करते हुए चलते हैं. मतलब माइनर कॉजेज होते हैं तो उसको हम नेग्लेक्ट करके हुए चलते हैं. हम ऑलवेज एनालाइज करते हैं जो प्रीडोमिनेटिंग कॉज होता है. तो इसलिए हम हमेशा जो बुल आई पे कभी भी हिट नहीं करते हैं. जब हम उन माइनर Okay, got it. कॉजेज को भी एनालाइज कर लेंगे तो हम एब्सोल्यूट ट्रुथ पे पहुंचेंगे, एंड देन वी विल एड्रेस द इफेक्ट very nicely. That is my understanding. Okay, in my good point. So there could be multiple causes, so you should be aware of it. Very simple point. बहुत बढ़िया. Good. Yes, सुशील जैन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? Go ahead. हाँ जी, सभी को नमस्कार.
अपूर्वा जी ने जो कहा कि देयर हैज टू बी सम कॉज अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द अर्थ, दुनिया की शुरुआत हुई तो उसका क्या है कॉज का, तो वहां एक अपन एजम्पशन ले रहे हैं कि दुनिया की शुरुआत हुई अंत भी होगा, लेकिन ये तो अनादि सर अनंत है। आपकी ऑडियो क्लियर नहीं है सर। सुशील जैन जी आपका एजम्पशन ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है। अपना एजम्पशन ये है, एम आई क्लियर नाउ? हेलो? हाँ गुड। हाँ हाँ अपना बोलिए। एजम्पशन इनके क्वेश्चन में, अपूर्वा जी क्वेश्चन में एजम्पशन था कि यूनिवर्स के बिगिनिंग का कॉज क्या है। वहां अपन एजम्पशन लेते हैं कि दुनिया की कोई शुरुआत है, अंत है, लेकिन दुनिया तो अनादि अनंत है, ये भी तो एक थ्योरी है। इस नेवर सर एंडिंग, नेवर बिगिनिंग। मैनिफेस्टेशन जो है, मैनिफेस्टेशन जो भी लाइफ में आ रही है उसका कॉज एंड इफेक्ट होगा। करेक्ट। अनादि अनंत जो आप बोल रहे हैं वो कॉजलेस कॉज है, जो सोर्स है उस क्रिएशन का। या सारी क्रिएशन का जो सोर्स है दैट इज कॉल्ड द कॉजलेस कॉज। करेक्ट। यू नीड टू हैव द राइट अंडरस्टैंडिंग। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी तभी आप आगे की बात कर सकते हैं। यूनिवर्स अनलिमिटेड नहीं है। यूनिवर्स कैन बी एक्सपैंडिंग, can be really immense and big, but there will be creation, so there has to be a destruction of the universe. वो हो भी रहा है, स्टार्स आते हैं स्टार्स जाते हैं, राइट। फिजिकल क्रिएशन जो भी होगा अगर उसका बर्थ हुआ है तो उसका डेथ भी होगा ही होगा। वी विल नॉट तो गेट इनटू दैट कोर्स, मैंने पहले ही बता दिया, वो हम डिस्कशन नहीं करेंगे यहाँ पे। हम कॉज एंड इफेक्ट की बात कर रहे हैं, कॉजलेस कॉज की बात नहीं करेंगे अभी। बट अंडरस्टैंड कर लीजिए कॉजलेस कॉज वी आर रेफरिंग टू द डिविनिटी, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है उसमें। यस, राइट है। let us limit our discussion to cause and effect in the physical universe, which means in your life। बाकी सब छोड़ दीजिए, अपनी लाइफ में देखिए। आपकी हेल्थ आपकी क्रिएशन है, यस। मैनिफेस्टेशन है, उसका कॉज क्या है? अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है उसका एक कॉज है, पता लगाइए क्या है। आपके रिलेशनशिप में अगर खटास है, देयर इज अ कॉज, फाइंड इट आउट। अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटस में जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटस है उसका एक इफेक्ट है ये, तो एक कॉज होगा, फाइंड आउट दैट कॉज। And the ultimate truth is that you are the cause for everything in your life, because you are the one who is creating your life. तो किसी और को ब्लेम नहीं करना है, हमको अपने कर्मास में आना है और अपने ही कर्मों को देख के अपना भाग्य बनाना है, और यही अंडरस्टैंडिंग हमको लानी है। यस, सो विल नॉट टॉक ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज, वी विल टॉक ऑफ आवर लाइफ। यस, परफेक्ट, वेरी गुड, जस्ट एक्नॉलेज मिस्टर जैन जी। यस, एंड देवेश जी आल्सो हैज शेयर्ड। यस अनिरुद्ध जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बीच में आप सर मैं अभी आपने कहा कि ये बात नहीं करनी है कि ये इसका अर्थ जो है, जो यूनिवर्स है, इसका स्टार्ट होने का काज क्या है। तो मैं अगर कहूँ तो 2 मिनट लूंगा, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, कह सकता हूँ? बोल दीजिए। हाँ, बोल दीजिए, अच्छा। बोल दीजिए। तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि जो काज, हर चीज का काज होता है, इस यूनिवर्स का जो काज है वो जीरो से कोई भी चीज होती है जीरो से स्टार्ट होती है, नथिंगनेस से स्टार्ट होती है। तो इसका जो काज था वो नथिंगनेस था। तो नथिंगनेस में जब डिवाइन आया, फिर डिवाइन ने कहा भाई, डिवाइन ने कि ये यार नहीं, मुझे नथिंगनेस नहीं चाहिए, मुझे इसमें कुछ चाहिए। तो उसने फिर ये यूनिवर्स बनाया और ये प्लेनेट बने और गैलेक्सीज बनी। तो दैट इज द काज ऑफ दिस आवर यूनिवर्स। दिस माय अंडरस्टैंडिंग। परफेक्ट, परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। उस डिवाइन को हम कॉजलेस कॉज बोल रहे हैं, बस इतना ही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यस, है ना? यस। वो नथिंगनेस जो आप बोल रहे हो, दैट इज द कॉजलेस कॉज। फ्रॉम नथिंगनेस एवरीथिंग केम। क्लियर? या, नथिंगनेस से ही एवरीथिंग आता है। एंड नथिंग, दैट नथिंग इज कॉल्ड, you can call that Shiva, you can call that Vishnu, you can call that whatever in your mythology, but basically we are talking of that as energy, the purest form of energy, and causeless cause. Simple. So that ends the discussion there. Yes, let's welcome somebody else. Praveen, welcome. Anybody else who wants to share, please go ahead. Tarun ji, welcome. iPhone 4, welcome. Milan Agarwal ji, welcome. Yes. Who would like to share your understanding of cause and effect, law of karma? हाँ जी, and we refer it to our life now. हाँ, थोड़ा सा specific हो जाएगा. So look into your life and see what are you creating in your life, and who is the cause. That is what will give some insights into our transformation. Yes, कौन बोलना चाहेंगे?
Anybody who wants to share? Otherwise, we will move on into the depth, into some further depths of this law. Any Yeah, understanding? Shashi ji, I would just like to say that Yes, Praveen ji, go ahead. when we see law of cause and effect, मतलब कि while 2 minutes ही मैं I've just joined 2 minutes back, but I just started thinking at once that instead of thinking of my life, I at once my focus went on the other person's life कि उसने ऐसे किया तो उसके साथ ऐसे हुआ. So actually I should focus on myself. Yes, that will be more relevant. क्योंकि उसके लाइफ में उसने क्या किया है आपको तो मालूम ही नहीं ना. वैसे तो उसको भी नहीं मालूम होगा अगर पिछले जन्म का होगा. वो तो मैंने देखा हुआ है. I have seen this person did this and this is the effect they've got after many years. It's not that they got it at once. After many years. So, but maybe I should focus on myself. Yeah. Yes, that will be more rewarding in the sense that transformation can happen. औरों की लाइफ को एनालाइज करने में तो अच्छा रहेगा. Understanding of law will become clear, but then you can't transform his life. So it is better if we keep it to our life, right? Okay, very good. So good understanding. Yes, anybody else would like to share? कौन बोलना चाह रहे थे? तरुण जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? Okay. Right, so we have got some understanding. All सबने अपनी अपनी understanding share की. So now let us look into some depth of it. Ready for it? Ready for it? Yes. Yes, I was okay. saying this one. Let us go to the depth only. Yes, तरुण जी बोलिए. कुछ बोल रहे हैं? We कह रहे हैं let us go to the depth only. हाँ, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी सर. सर You're डीपर not बात audible. करते हैं आगे नेक्स्ट लेवल. हाँ ठीक है, समझिए. डीपर बात करते हैं. Okay, got it. All right. So now you have to understand, as we said, the energy created by me and radiated in the outside world is my karma, and that energy, when it is coming back to me from different people, that I call that as my destiny or the return path में जो भी आ रहा है मेरा भाग्य है. Correct? Now you have to understand, in this long journey of many births, there are many karmas that you have done in previous lifetimes. पर वो आपके ही कर्म है. So individual karma is one aspect of cause and effect, right? Also, there will be some ancestral karma or the genetic karma in which family you are born. So there is a whole lot of karmas that you are inheriting as a genetic karma from your father, from your parents, from your grandparents, from your great-grandparents, and the whole lineage, maybe 7 generations up. Yes. And in this lifetime, that will be coming genes. So genetic karma is definitely impacting you. So whatever actions you are doing will be governed or you can say conditioned by the genes or the genetic karma that you are inheriting from your parents, from all the past lives that you have, the karma that you have done in all your past lives. Correct? Plus also the conditioning of this life, which we are fully aware of. We are all aware कि इस जन्म में भी हमारी काफी कंडीशनिंग हुई है. तो उसी हिसाब से हम सोच रहे हैं, उसी हिसाब से हम बोल रहे हैं, उसी हिसाब से हम कर्म कर रहे हैं. So the society, the family in which I am born, the family in which, I mean the relatives who are influencing me, the society, immediate society which is influencing me, all this will also be giving me the imprints or the sanskars which will come into play in my karma. ये सब हो गया हमारा individual karma. But there are many times, many things happen in your life which is beyond your control or beyond your, you can say, scope of actions. Now you are born in India, so there is a whole, or in a state. So whether you are in Delhi or whether you are in UP or wherever, collective consciousness will also come into play. So there is a collective karma also which is happening. So if you are born in a country and that country is in a war with some other country, you will have to face the consequences of the country's karma. Yes. So it is not that very simple. So collective karma or collective consciousness also plays a major role in the events happening in your life. So I may be very careful about the karma that I am doing, but I will still have to face the consequences of the
higher conscious, not higher consciousness, collective consciousness of the state, of the society where I'm living, of the state where I'm living, of the country I'm living, and of course, the consciousness of the planet Earth is also operative in events happening in my life. So are we clear about this? Yes. So if you're born in a country and that country, I'm just giving an example, is in war with some other country, you will have to face the consequences. And it may be good, it may be bad, it may be ugly, whatever. So that is also part of your destiny. It is happening in your life. So it is destined to happen, to impact you. And that will be the result of collective karma. So collective karma is also very, very powerful in impacting our lives. We need to understand this also. So having said this, there are many things that you would have to accept. Change नहीं कर सकते. अगर आप इंडिया में born हुए हो, इंडिया में अभी सिनेरियो, political scenario जो भी चल रहा है, you will have to bear the consequences of it. You will be under the impact of it, and within that scope, whatever best you can do, you will choose your karma. Yes, I hope I am clear on this. इसमें कोई doubt नहीं होना चाहिए, और इसमें blame नहीं करना है. You have to still be accountable and responsible for whatever actions you can do in the form of your पुरुषार्थ. आपके स्कोप में जो है बेस्ट वो आप करेंगे. So that is another way of deciding what my karma is going to be in the face of whatever situation I am facing. Yes. Okay, so anybody who wants to share something on this? Otherwise, we will move on to the next level of discussion. Is that okay with everybody? Whatever be the situation that you are facing, or whatever is the situations that are impacting your life, you still have the choice of choosing what the next karma that you are going to do. What is the next highest thought that is possible for you? What is the highest words that you can use? And what is the highest level of actions that you can do? That will impact your level of karma, and that will impact your level of destiny. No doubts about that. Rule is the same. Only thing is you have to take care of individual karma, you have to take care of family karma, you have to take care of society karma, and you need to understand that country's karma will also impact your life. Clear? Now, yes. Deveshi, कुछ कहना चाह रहे हैं? It includes the world level also, because the globalization. Yes, obviously. You are on planet Earth, so planet Earth का कर्मा भी होगा. Planet का भी कर्मा आएगा. Collective consciousness is of the planet also. Yes. Right? So if all the spiritual, you can say masters and the light workers on planet Earth are doing meditation, that is powerful because that will impact the destiny of the planet Earth. Yes. Thing that we can do collective consciousness को raise करने के लिए, we can do collective healing, we can do collective meditation, collective prayers. All this is very powerful, and that is why we do this. Yes, very good. So having understood this, now let us move to another level of discussion, which is how do you actually understand the law of karma and how it applies, right? एक हमारी बाहर की दुनिया है और एक हमारी अंदर की दुनिया है. बाहर की दुनिया वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति. I keep saying this, huh? People must have learned this by heart now. तो बाहर की दुनिया में वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति है, और अंदर की दुनिया में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है. Yes, inside world, outside world. Everybody clear on this? And how you experience this is through the physical form that you are in. That will give you the experience of what is happening in the outside world and what is happening in the inside world. Now, whatever energy I am creating, which means whatever karma I am doing, it will have an impact or an imprint in my inside world. Yes, बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि जो मेरे संस्कार हैं वो और डीप हो जाएंगे और you can say और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, राइट? और जो मैं बाहर कर रहा हूँ, जो किसी के साथ, जैसे किसी मेरे पड़ोसी के साथ मैंने कुछ कहा, या अपने पार्टनर के साथ मैंने कुछ किया, या अपने दोस्तों के साथ मैंने जो भी कर्म किया, या कुछ बोला या कुछ सोचा. यस, तो एक तो कर्मों का जो फल है एक बाहर की दुनिया में होगा और एक अंदर की दुनिया में होगा. बाहर की दुनिया में बहुत क्लियर है. इफ आई एम डूइंग समथिंग टू, मे बी saying something to Amit ji or to Sanjeev,
then it has an effect and it has to come back to me. Clear है? और ये 1 to 1 होता है, सोल टू सोल कनेक्शन होता है, तो हर सोल का एक दूसरे सोल के साथ एक कार्मिक रिलेशनशिप है, एक कार्मिक अकाउंट है, और वो अकाउंट जब तक 0/0 नहीं होगा तब तक हम लोग मिलते रहेंगे, इस जन्म में, अगले जन्म में और अगले जन्म में। तो कभी कभी जो जिन सोल्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक कॉन्टैक्ट होता है वो जन्मों जन्मों तक मिलते रहते हैं। अल्टीमेटली वी विल come to a situation where the energy is of love, peace and joy. Till then we will, जब तक हमारा बैलेंस वो सही नहीं हो जाता है तब तक हम मिलते रहेंगे। तो सोल टू सोल कनेक्शन में ये बाहर की दुनिया में चलता रहेगा। दिस इज वेरी क्लियर। आउटसाइड वर्ल्ड में हम लॉ ऑफ कर्मा को समझते हैं, इनसाइड वर्ल्ड में कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। सपोज आई हैव ए फाइट विथ माई नीबर। लड़ाई हो गई, मारधाड़ हो गया, पहले बात हुई, पहले तो थॉट्स में लड़ाई हुई, पहले हम दोनों के थॉट्स विचार मिलते नहीं थे, दूसरे को हमने भला बुरा सोचा, फिर भला बुरा कहा और फिर मारधाड़ हो गई, पुलिस केस भी हो गया, जो भी हो गया करेक्ट। ये तो हो गया बाहर की दुनिया में, और उसका रिजल्ट होगा। अब if it is resolved in this lifetime, very good, otherwise in the next lifetime when we meet we will again be very violent with each other. Yes or no? Yes. Then we have another opportunity to improve that relationship, and it will keep on happening till we come to a relationship where it is full of love, peace and joy. होगा ये? बिल्कुल होगा। जब तक नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा, क्योंकि कार्मिक अकाउंट नेगेटिव में नहीं खत्म होता है। अगर वो 0/0 करना है, it has to be an energy of love, peace and joy, because that is our essence. That is what each soul is made up of, the original sanskars. So that is where the relationship has to come to. Yes, बाहर की दुनिया में क्लियर है सबको? Any relationship has to be a soul to soul relationship, and that karmic account has to be square off absolutely perfectly. अब जो वायलेंस की बात आई, जैसे पड़ोसी के साथ में बोल रहा था, वो वायलेंस के बीज अगर मेरे अंदर हैं तो वो बीज पेड़ बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि मेरी चित में है वो सीड है वायलेंस के, गुस्से के, एंगर के, वायलेंस के, हेट्रेड के, जेलसी के, ये सब सीड बन के पेड़ बन के बाहर निकल रहे हैं। अब ये अंदर अगर ये है तो मैं बाहर की दुनिया को क्या दूंगा? मैं वही दूंगा जो मेरे अंदर है। तो मैं दुनिया को, उस पड़ोसी को नहीं, मैं अपने बहुत सारे लोगों को लाइफ में वायलेंस दूंगा। अब वो बाहर के एक और ट्रेंड शुरू हो गया, एक और चेंज शुरू हो गई, उससे मेरा वायलेंस और इम्प्रिंट हो गया स्ट्रॉन्ग। So my sanskar of violence and anger and hatred is getting more and more strong in me. और जितना ये अंदर स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा मैं बाहर दूंगा। Everybody getting this connection? तो कर्मा वर्क्स बोथ वेज। इट हैपेंस इन द आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड को तो स्क्वेयर करना ही है, लेकिन अपने अंदर के चित्त को भी साफ करना है। दैट इज वाई ऑन ए स्पिरिचुअल जर्नी द मोस्ट इंपॉर्टेंट साधना इज टू क्लींस योर चित्त। दैट इज वाई वी डू प्राणायाम, मेडिटेशन। सो क्यों? क्योंकि उसी से हमारा चित्त साफ होगा, यानी कि क्लींस होगा, और ये वायलेंस, एंग, काम, क्रोध, रोग, मोह, मत, मत्सर, जो भी हमारे बीज हैं, ये डोरमेंट होंगे और इनको हमको रिमूव करना है। Why? Because so that we don't spread this. And what were we going to spread to the outside world? Love, peace and joy. तो उससे क्या होगा? लव, पीस एंड जॉय जब हम स्प्रेड करेंगे तो ये बीज जो है ये डोरमेंट होंगे, अंदर से बिल्कुल चित्त साफ हो जाएगा, और बाहर की दुनिया से जब कोई लड़ने के लिए आएगा तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। धीरे we will be spreading love, peace and joy to everybody. So it is always an inside out approach. To square off all the karma in your life, you have to start from the inside out approach. Fill yourself with love, peace and joy with your spiritual sadhana, and then radiate that to all the people in your life. That is the only way to square your karmic accounts with people. Yes or no? How many of you can get it? And this is actually the right understanding of the law of karma, cause and effect, in the outside world and in the inside. So let's have some discussion, because this is, if you have not heard it before, it will be slightly profound. So let's have some sharing so that we can really absorb this wisdom of the law.
Yes, Samitji, go ahead. That's a very deep level thing which you just mentioned, but there is on a funny side, same thing when I also speak to people. शायद आपने भी सुना होगा, there is something in Hindi which I say that whoever is hurting us today in this life, पक्की बात है पिछले जन्म में हमने उसकी भैंस खोली होगी और इस जन्म में वो हमारी भैंस खोल रहा है. So I think it's a very small simple thing, but yeah, it's at times it makes the person. But that is only one account. That is only one account. But if you are not cleansing that imprint in your chip, you will be giving birth to those kind of accounts maybe 100 times. आप 100 लोगों के साथ और वो अकाउंट बना लेंगे इससे पहले कि वो डोरमेंट हो, क्योंकि वो एक्टिव हो चुका है. और अगर वो एक्टिव हो चुका है तो आप लोगों को वही दोगे जो एक्टिव है. Yeah. That is dangerous. So law of karma actually is like that. जो आप जैसे हम अगर कोई मैंगो खा के मैंगो की गुठली, आम की गुठली फेंक देते हो, एक और पेड़ बन जाएगा. उससे कितने मैंगो बनेंगे? और फिर उसके जो जैसे जो ये खाएगा और वो फेंकेगा, और ये पेड़ आपके अंदर है. जो बीज आपने बो दिए हैं वो पेड़ आपके अंदर बन रहे हैं, मैंगोस और बन रहे हैं वायलेंस के. वो और खाओगे और बांटोगे और बीज बनेंगे और गुठलियां बनेंगी और पेड़ बनेंगे. यू विल बी फुल ऑफ कैक्टस एंड hatred. Get my point? It's very, very important to understand what is happening in the inside world is more important than what is happening in the outside world. Because your inside world is creating your outside. पहले हमको अपने inside world को अपनी साधना से रोकना होगा और फिर अपनी जो व्यवहारिक जिंदगी है उसमें विजडम या अपनी इंटेलिजेंस लेके अपने लोगों के रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करना होगा. दैट इज ओनली वे वी कैन move ahead on the spiritual journey. And today only I was reading a post. If your life is full of violence and anger and hatred, then you're not moving on the spiritual journey. You're just you can taking a leisurely walk in a park. थोड़ा सा घूम के वापस आ जाते हो घर में, वही याद है. So it has to be a real powerful sadhana to cleanse your chit. Otherwise it doesn't make any sense. Yes, so let's have some more sharing. What is understanding? हाँ जी, एक तो आपने कहा शशि जी कि लव, लाइट एंड पीस हमने अपने आप में डेवलप करना है टू ब्रेक द कार्मिक साइकिल विद सर्टेन पीपल. पर फॉरगिवनेस भी इज इट वर्क्स. Same. Love and light is forgiveness. ओके. एंड Love, peace and joy अगर आप देंगे तो and I stop having anything to do with that person, that is, it works. अंदर क्या चल रहा है बताइए. बाहर तो छोड़ दीजिए जो होता है, बाहर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. आई डोंट रियली केयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड. अंदर क्या चल रहा है उस इंसान के बारे में अगर मैं बोलूं, जैसे मान लो वो एक्स है और मैं प्रवीण जी आपके सामने वो सेक्स की बात करने लग गया. हाँ, मिस्टर एक्स ऐसा है, मिस्टर एक्स वैसा है. अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है? जैसे उसकी नाम सुनते हैं आप क्या बोल रहे हो? अगर आप बोल रहे हो उसके मुंह कीड़े पड़े, उसको मर जाए वो, ये तो आपके अंदर एंगर है. अगर आप बोलते हो हाँ कोई बात नहीं, अब हम दोस्त नहीं है लेकिन ठीक है, गॉड ब्लेस हिम, तब ठीक. Yeah, this is the attitude. Yeah. So that is why I gave you both the statements. कौन सी स्टेटमेंट आप बोल रहे हैं? अगर आप बोल रहे हैं भगवान उसको खुश रखे, अच्छा हम दोस्त नहीं रहे कोई बात नहीं, बट ठीक है, he is happy in his world, I am happy in my world, may God bless him. That is good enough. That is good enough. See, I told you, I posted before also, माफ करना अलग चीज है और उनको अपनी लाइफ में एंट्री देना अलग चीज है. Correct? You can one from the core of your heart, from inside, but outside में आपको उनको वापस वेलकम करने की जरूरत नहीं है. बट चित क्लियर होना चाहिए कि वो खुश रहे, आबाद रहें और दूर रहें. ठीक है, खुश रहो, दूर रहो, that is okay. Good. Yes, Good. so you should not have any animosity with them. Okay, Good. I'm happy that what I'm doing And keep is sending them. If in case they are not sending you the blessings, then you have to keep sending the blessings till you receive the blessings from them. Okay. तब तक अकाउंट पूरा नहीं होगा. आपने उनको इग्नोर कर दिया, आप उनको दुआएं दे रहे हैं लेकिन वो आपको गालियां दे रहे हैं, तो नहीं चलेगा. You are receiving a lot of negative energy from, you have to heal that. आपको लव, पीस एंड जॉय की एनर्जी भेजते रहना होगा जब तक वो न्यूट्रलाइज नहीं होता है. But that's a Yes. lot of work.
I'm तो doing my side. Yes, that is वो why you are अपनी here. side पे नहीं, That is जब from वो that. अपनी side पे नहीं करेंगे तो फिर तो अगले जन्म में आपका बेटा या बेटी बन के आ जाएगा, फिर क्या होगा? फिर मार धाड़ होगी। हिसाब तो चुकाना ही पड़ेगा ना, तो अभी से चुका तो अच्छा है। ठीक है। अभी तो आपने कह दिया दूर रहो मेरे से, कोई बात नहीं, मैं को दुआएं दो, लेकिन वो बददुआएं दे रहे हैं, वो आ जाएगा, सास बहू बन के आ जाएगा, कुछ भी बन के आ जाएगा। क्या करोगे फिर मार धाड़ होगी, कहीं कहीं बन के आ जाएगी, तो क्या होगा? आपको वनवास जाना पड़ेगा। हाँ, anyway, so said in a Thank lighter you vein, for but the, understand this: yeah. nothing is going to be pending. सब कुछ रिजॉल्व करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए आप आए हैं ना, जितने जन्म लेने हैं लो, लेकिन सॉल्व करना ही पड़ेगा। यस, ऑलराइट, वेरी। ओ, माय इंटरनेट इज अनस्टेबल। एम आई ऑडिबल? नो, आई एम नॉट। यस, नाउ यू आर ऑडिबल। बीच में आवाज जा रही थी। नाउ आई थिंक इसके ना तो टोटल अनस्टेबल हो गया है। फिर से थोड़ा फ्रीज हो गया। एग्जैक्टली। बट प्रवीण जी, व्हाट यू एम सेड आई एंड ऑडिबल नाउ? नो, इट्स नॉट क्लियर शशि। फ्रीज हो गया है? आवाज आ रही है अभी? आवाज आ नहीं, रही? आवाज फ्रीज नहीं आ रहा। शशि, आवाज है, फ्रीज है पिक्चर। Anyways, in the meanwhile, Praveen ji, what you asked is very relevant. And yes, इसी को पुरुषार्थ बोला गया है कि बिकॉज हमारे इतने कार्मिक्स भरे हुए हैं कि उसको क्लियर करने में एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे। बट दी व्हाट आई फील बाय द टाइम शशि कम्स, आई फील वन थिंग, द जर्नी इज, जितने लोग स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं, बिकॉज इफ यू सी अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट एवरीबॉडी इज इनटू स्पिरिचुअलिटी। जो जितने लोग स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं, दैट्स वेयर आई फील, दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू, वो अपनी क्लियरिंग साइकिल में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। Yeah. दैट्स द बेस्ट पार्ट व्हाट आई फील। एंड शशि इज बैक हियर। शशि, ओवर टू यू। Yes, thank you, Sanjeev, for answering that, and that is exactly the point. As long as you're on a spiritual journey, you are here to clear that account only. जो सो रहे हैं वो तो सो ही रहे हैं ना, वो तो अभी और अकाउंट बनाए जा रहे हैं। जो जाग गए हैं वो कुछ कर सकते हैं। वैसे ही बात होती है ना, जो बैट्समैन खेल रहा है वो रन बना सकता है, जो आउट होके चला गया या जो आया ही नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। तो आप खेल रहे हैं, आप प्लेयर हैं, आप खेल रहे हैं, so obviously there is a lot of scope for you to improve. Yes, all right, very good. Let's acknowledge Parveen ji, and Thank you. let me also take some sharings from Sushil Jain ji. Sushil Jain ji, आपने hand raise किया था, go ahead. Yeah. I hope I am able to express myself. मैं एग्जांपल से आगे लेके जाना चाहूंगा बातें। आपने कहा था किसी से लड़ाई हो गई, नेगेटिविटी हो गई, पुलिस केस हो गया, तो बाहर की दुनिया में क्या हुआ वो आपने समझाया। अब भीतर क्या हो रहा है? भीतर भी नेगेटिविटी का जो सीड हो गया, अगर मैं भीतर भी अभी तक उसी के साथ ब्रूडिंग कर रहा हूँ, वो ग्रजेज जगह तक कंटिन्यूस भीतर रख रहा हूँ, तो नो मैटर व्हाट माय आउटसाइड एक्शन इज, अभी तक वो भीतर फलते रहेगा, बढ़ता रहेगा, उसका नेगेटिव इफेक्ट, इट विल बी नेगेटिव स्पाइरल गोइंग डाउन डीप एंड डीप। Absolutely, So, absolutely. so I think what you are coming in the next level is something like that. Ki whatever or in whatever way the negativity has triggered, either by your action or by somebody else's action, we need to deal that negativity within ourselves and turn it into love, peace, and joy. Absolutely, perfect. बहुत बढ़िया. That is the right understanding. क्योंकि अंदर जब Thank आ you. जाएगा ये ट्रांसफॉर्मेशन, फिर वो धीरे धीरे बाहर की दुनिया को न्यूट्रलाइज करता हुआ बैलेंस में ले आएगा। यस, क्योंकि बाहर की दुनिया में जो हो रहा है, दैट कुड बी ओके। सपोज कर लीजिए जैसे पुलिस केस ही हो गया और पुलिस ने जो भी है सुलह करा दी, कुछ फाइन लगा दिया, कुछ ये कर दिया, जो भी करना है कर दिया, जिसको सजा देनी थी मिल गई सजा, वो क्लियर हो गया। लेकिन अंदर अगर आप हेटरेट लेके चल रहे हैं, तो अगले जन्म में या इसी जन्म में जब दोबारा मिलेंगे तो क्या होगा? फिर वायलेंस और फिर एग्रेशन आएगा, आना ही है, क्योंकि अंदर से साफ नहीं हुआ ना। इसीलिए स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद हमको एक मौका मिलता है कि हम दूसरों को माफ कर सके, खुद को माफ कर सके, और या तो स्पिरिचुअल हीलिंग के रास्ते पे या फिर प्रायश्चित और
जो पश्चाताप बोलते हैं, जिसे तपह बोलते हैं, तपस्या करके अपनी विकारों से मुक्त हो जाए, तो फिर आपका काम सही हो जाए। तो पहले जो पेनेंस करते थे या तपस्या करते थे, वो क्या करते थे? बाहर की दुनिया के लिए थोड़ा ना करे, वो अंदर की दुनिया को साफ कर रहे, ताकि बाहर जो हो गया वो पश्चाताप है, प्रायश्चित है, और वो अपने अंदर के विकारों को उन्होंने, जो उन्होंने गलत कर्म किए थे, जो गिल्ट है, उस गिल्ट को आप फ्री हो गए, राइट? और फिर बाहर की दुनिया में जो होना है वो तो होगा ही होगा। क्लियर? यस, वेरी गुड, गुड अंडरस्टैंडिंग। लेट्स हैव सम मोर पीपल शेयर, एंड ऑफ कोर्स any special sharing from Sanjeev and Amit ji? Welcome. What is your understanding? If you can share, it will be great. And also in line with Buddha Purnima tomorrow, so Lord Buddha's teachings also says, Buddha was never in favor of gods and Vedic mantras and all that, but he always was a great follower of understanding of cause and effect. Karma is the only thing that he believed in. कि किसी में उनको बिलीव नहीं, कर्मा इज द ओनली थिंग। दिस आर योर थॉट्स, इफ यू कैन इंप्रूव द इंटेंशन बिहाइंड योर थॉट्स, यू विल बिकम ए ग्रेट पर्सन। तो इसीलिए वो चित्त को साफ करने की बात करते थे एंड कर्मा की बात करते थे। यस संजीव, ओवर टू यू, आई हैव गिवन यू सम लीड। Exactly, thank you, and that's a great trigger. It's not just a lead, it's a trigger. But what you are talking and what Pravinji was saying a while ago, so I feel one thing, it's not only in your words or actions कि आपने अपने मन में सोचा कि, या आपने खाली बोला या अपने एक्शन से दिखाया। इवन आपने दिखाया अच्छा, लेकिन आपने थॉट में रखा कि उसका बुरा हो जाए, उसके कीड़े पड़े, वो भी कर्मा का पार्ट बन जाता है। And that's where Buddha has always been telling, and Shashi, like कि I have done the advanced level of Vipassana, वहाँ पे स्पेशली ये बताया गया है कि moment, and it has been scientifically told, which I have experienced at my body level also, जहाँ आपके मन में कुछ भी विकार जागा, अच्छा या बुरा, उस संग के संग बॉडी सेंसेशन में आता ही आता है। और बॉडी सेंसेशन का मतलब, दिस इज माई ओल्ड स्टेटमेंट, हमारे लाइफ के इश्यूज जो है ना, वो दुनिया में नहीं है। आई ऑलवेज से इश्यूज आर इन टिश्यूज। तो हमारे लाइफ के जितने इश्यूज होते हैं हमारे टिश्यूज में जाके बैठ जाते हैं, और वो हमें फिजिकली और फिर मेंटली दोनों तरह से परेशान करते हैं। सो लेट्स गेट रिलीज्ड ऑफ इट, दैट्स व्हाट आई वुड से। एंड दैट इज दी ग्रेट थिंग कि वी ऑल आर सो लकी कि हम किसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं। किसी न किसी जन्म के अच्छे कर्म थे, कुछ बीज डले हुए थे, जो आज हम इतनी जल्दी आ गए हैं, हम इतनी डेप्थ में बात कर रहे हैं। आई रियली एंजॉयड द वे क्वेश्चंस कमिंग इन दिस सेशन टुडे। बहुत डेप्थ के क्वेश्चन आया, अपूर्वा जी ने पूछा, प्रवीण जी ने पूछा, सुशील जी ने बताया, अनुरुद्ध जी ने बताया। इट्स लाइक डेप्थ, और ये हमारी ब्यूटी है सबसे अच्छी, और ये हमारा जो कॉज है, ये हमारे लिए अच्छे इफेक्ट्स क्रिएट करने वाला है। दैट्स व्हाट आई फील, शशि, इन ब्रीफ। थैंक यू वेरी मच। Very good, Sanjeev. Thank you for your wonderful sharing. Great. Yes, Amit ji, क्या बोलना चाहेंगे? Your takeaway and your sharing from this session. Two things, and I totally believe in karma for sure. I mean, I advocate and talk, but somewhere, sometimes I think that for people who still have to see the praman, the proof that yes, पिछले जन्म के karma, yes, जन्म के karma are affecting me today. So I understand a theory which is a little more scientific. Neuroscientists talk about it, but that is also limited answer to it. And that is that whatever thoughts, we all know that thoughts are vibrations. So whatever thoughts that we have, they travel like waves, like crest and trough, जो हमने physics में पढ़ी है, and they attract back this similar experience and vibrations back to us. Today, internet is full of such studies which have proven that it happens. So the very thought, and then a thought होगा तो वो action आएगा, speech आएगी बीच में, and obviously these things come back. And this is the proof that from the ancient times we've understood that karmas work. I think this is one thing which
makes it more scientifically provable for the scientific bent of mind people. Now, having said that, one more point, that how can I scientifically, once again, not me, but for those people, can connect that yes, it is the truth that या पिछले जन्म में या पिछले कुछ सालों में कुछ किया, which is affecting me today. So I'm not asking for an answer for it. Personally, I'm convinced. I mean, I have seen it in my own meditation, but I find it at times a little difficult to speak and convince when it comes to a proof. I think this is the question, crisply. So if you have or somebody has an answer to it, then what is the proof of it? Though I understand Gita has spoken about this, our own chit also signifies. We also know that when we hurt somebody, somewhere antaratma ka koi hissa hai which also gets hurt, and vice versa. So coming back to the question, I don't know what is the proof for the past things which are coming back to us now. Okay. Let's acknowledge Amitji. Very good sharing. May I speak? Yes. See, you have to understand some energy aa raha hu aapke paas. See, when you talk of scientific proof, so there is a very detailed study which has been done in the form of neuro-linguistic programming, and we are very soon coming out with a program for that also. So much looking forward. Right. And basically, what does it mean is, like aapke, see, when we talk of chit, we are talking of subconscious mind, correct? So subconscious mind में आपके जो भी imprints हैं, yes, maybe this lifetime, maybe this इस 50-60 साल में जो आपकी लाइफ टाइम है उसमें आपके कंडीशंस बने हों, उसमें आपके इम्प्रिंट्स आए हों या पिछले जन्मों से आए हों, डजंट मैटर, वो सारे के सारे वही हैं, सबकॉन्शियस माइंड में है. सबकॉन्शियस माइंड इज समथिंग साइंटिफिक, वी नो दैट, राइट? एवरीबॉडी नोज दैट. एंड देयर आर इम्प्रिंट्स इन द सबकॉन्शियस माइंड व्हिच आर डीपर देन द ओशंस. तो इतने इम्प्रिंट्स हैं उसमें, करेक्ट? अब इनको क्लीन कैसे कर सकते हैं? यस, सो देयर इज ए मेथड ऑफ रीप्रोग्रामिंग द सबकॉन्शियस माइंड. दैट इज व्हाट एनएलपी इज ऑल अबाउट, करेक्ट? तो अगर आप अपने माइंड के पैटर्न्स को, न्यूरोपाथ्स को चेंज कर देते हैं, तो जो फीलिंग, जो अभी संजय ने बताया, फीलिंग जो बॉडी में है वो चेंज हो जाएगी. तो अगर पेन के इम्प्रिंट्स हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में, तो बॉडी में वो पेन के जो फीलिंग्स हैं, जो फिजिकल फीलिंग्स जो सेटल डाउन हो गए हैं, वो डिजीज के फॉर्म में आएंगे. और अगर आप उसको पेन के जो इम्प्रिंट्स, जो न्यूरोपाथ्स हैं, उनको चेंज करके उनको प्लेजरेबल बना देते हैं, करेक्ट? तो बॉडी में जो सेंसेशंस आएंगी वो कैसी होंगी? वो वेलनेस के आ जाएंगे. सो न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट रीप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड so that you can transform all the areas of your physical existence. तो माइंड से बॉडी में चेंजेस ला सकते हो, एंड ऑल्टरनेटिवली यू कैन ऑल्सो चेंज द, you can say, the physical activity actions in your body and then create new neuropaths. आप नए हैबिट्स बना लो, आपके नए न्यूरोपाथ्स बन जाएंगे, और उन न्यूरोपाथ से आप अपने माइंड के पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं. सो इट वर्क्स बोथ वेज, बॉडी टू माइंड एंड माइंड टू बॉडी, and that is what we had introduced in the last session. And definitely NLP is scientific. So if you want to talk about to convince somebody, you can always say science has already done a lot of studies. Neuro-linguistic programming is one, and very soon we are coming with a program. People who are interested, just to, you can make a note of it and watch the space. You will get the relevant post there, and we are starting this program very soon, maybe in June, and that is completely about how to reprogram your subconscious mind and how to create wellness in your physical body, physical existence. Could be in health, could be in wealth, could be in relationships. Yes, so that answers a little bit. तो आपको स्क्रिप्चर्स नहीं सुनाना है. अगर कोई स्पिरिचुअल नहीं है तो स्क्रिप्चर्स नहीं सुनेगा आपसे, वो एनएलपी सुन लेगा. Yes, so that is another one reason why I am introducing this program, because not everybody is interested in spirituality, but people are interested in NLP. Yes, I hope that answers your question, Amiji. Yes, Sanjeev, I'm sure will like to add something more. Hanji? This has opened up the area where I will need to think more and do my own research more. I think I got the door to the answer. Very good, Amiji. Let's also hear from Sanjeev. Sanjeev wants to add something. Yeah. Yeah, what Amitji said and what we're talking, NLP is actually a tool which is being used, which has been used and regularly used by all the successful people. Correct. To an extent, if we talk about Sachin Tendulkar, he was a great player because he has imbibed the NLP technique for his success. We talk about any celebrity, anybody, because they all know the power of NLP.
for any success, whether it's a materialistic success, spirituality success, financial relationship, NLP is one tool which goes which makes it's very simple for everyone. And I, being also a coach of this and a certified coach for this, I can vouch for it. It works like super fantastic. And that is where Amitji, what he was asking, that's a real one of the thing, which is a scientific way of reconditioning everything. That's what I would say, right? Perfect, perfect, Sanjeev. Thank you for sharing that. Yes. Yeah, scientific Yes, Amitji. way of- just one question. So scientific way of reconditioning. Yeah, perfect. I knew this, and I'm so much looking forward for NLP and this session and also. But then I'm saying that it can also open the door to understand and have a proof of the past karma connected to the today's results. Is it? Yeah, definitely. You can say cause and effect. कर्मा छोड़ दो ना, स्पिरिचुअल नहीं है तो वो कर्मा की बात भी नहीं सुनेगा. आप Yeah. कॉज एंड इफेक्ट बोलो, ये साइंटिफिक है. Yes. For every effect there has to be a cause. अगर आपको आज गुस्सा आ रहा है तो उसका एक कॉज है आपके अंदर. Yeah, Newton's law. वहीं से ठीक हो जाएगा. Yeah. Yes, the cause and effect Perfect. बताओ. Thank you. Yes, I'll come to you, Vivek ji. एक second hold कीजिए. Anirudh wanted to share something. Anirudh ji, please go ahead. सर मेरी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है एक्सपीरियंस के बेस पर जो जर्नी है उसको ठीक जर्नी को कैसे बनाया जाए, स्मूथ बनाया जाए, उसका एक तरीका ये देखा है कि कोई भी हमारी लाइफ में कोई भी एक्ट या इफेक्ट जो भी आता है उसका हमें पता होना चाहिए उसका लॉजिक क्या है उसका. अगर एंगर आ रहा है तो एंगर गलत, ये तो हमने सुन लिया कि एंगर गलत है, परंतु एंगर गलत क्यों है, सच बोलना है, सच क्यों बोलना है, झूठ क्यों नहीं बोलना है, मुझे एंगर क्यों नहीं करना है. तो उसका जो हमें लॉजिक, किसी भी बात का लॉजिक पे जाएंगे कि ये उसके पीछे कहानी क्या है, व्हाई गॉड वांट फ्रॉम अस नो एंगर, उसका गॉड ने भी कोई सोचा होगा ना हमें एंगर नहीं करना है. तो उसके लॉजिक, हर चीज के लॉजिक में जाएंगे तो फिर उसको फॉलो करना आसान हो जाए. Okay, I will not get into that discussion, but I got your point. Thank you very much, Anirudh ji. Okay, good. Yes, कौन बोलना चाह रहे थे? Somebody else had raised hand. Vivek ji, yes, go ahead. यस सर. सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है. मैं बेसिकली समझना चाहता हूँ कि एक तो होते हैं कि लोगों के थ्रू हम कर्म अट्रैक्ट करते हैं कुछ अपने व्यवहारिक आचार विचार से, कर्म डे टू डे अपने एक्शंस, रिएक्शन से. एक है इनडायरेक्ट. फॉर एग्जांपल मैं किसी डेवलपर के साथ एसोसिएटेड हूँ जो कॉलोनी बना रहा है. आई एम टॉकिंग पैरेंट लैंड है, पेड़ लगे हुए हैं, पशु पक्षी फार्म है. अब वहाँ पे मुझे वो मतलब बाय वे ऑफ दैट एक्शन टू डेवलप दैट कॉलोनी कुछ पेड़ों को काटना पड़ेगा, कुछ जानवरों को विस्थापित करना पड़ेगा, कुछ अपने आप होंगे मतलब, बट मैं नहीं कर रहा हूँ, बट बाय डिफॉल्ट मेरे को उस पर्टिकुलर ड्यूटी की वजह से मैं वहाँ बैठा हूँ, विच इज थिंग्स आर नॉट इन माई कंट्रोल बट इट्स हैपनिंग. तो एम आई अट्रैक्टिंग बैड कर्मा? am I adding some bad karmas for my current life and future, जो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कॉन्शियस वे से जब भी अब करूँ कि किसी के साथ अगर कोई आचार व्यवहार भी कर रहा हूँ तो आई शुड नॉट से समथिंग और डू समथिंग विच एड टू. ये तो व्यक्ति की बात हो गई, पर आई एम टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्ट पीपल या इस तरीके से जैसे नेचर रिलेटेड चीजें. तो इन दो चीजें जैसे हमने बात करी थी ना अभी, हमने जैसे बात करी थी, दो चीजें हैं. बाहर की दुनिया में आप जो भी करेंगे वो आपको वापस आना ही आना है. अच्छे कर्म करोगे तो दुआएं मिलेंगी, खराब कर्म करोगे तो जो भी मिलेगा मिलेगा आपको. कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको आएंगे ही आएंगे बाहर से. पर उसके साथ साथ अंदर की जो इंटेंशन है आपकी और जो इमोशन है, दैट विल क्रिएट एन इम्प्रिंट इन योर इनसाइड वर्ल्ड. ये आपके कंट्रोल में है. अगर आपने किसी का बुरा नहीं चाहा तो अंदर की इंटेंशन क्लियर है ना, पॉजिटिव है ना. जी. यस, तो वो आपको अंदर की दुनिया में कोई खलबली नहीं मचेगी. बाहर की दुनिया में अगर कुछ ऊंच नीच हो भी गई तो कॉन्सिक्वेंसेस आप फेस करने के लिए तैयार हो. दैट्स ओके. करेक्ट. अब चलते चलते आपने कितने चींटियां और कीड़ों को मार दिया होगा बिना देखे. आप उनको मारना नहीं चाह रहे थे लेकिन वो पाँव के नीचे आ गए, गाड़ी के नीचे आ गए. राइट. So you will have the consequences, but intention नहीं है, इसलिए it will not be very
profound or harmful. That's all. You can understand it that. Okay. Thank you. Clear? Yeah. Most Yeah. important behind karma is your intention and your emotion. भाव और भावना इसको बोलते हैं. तो ये दोनों जरूरी है. इंटेंशन मारने की नहीं है, एक्सीडेंट हो जाता है, यू विल कम इवन इन द कोर्ट्स, यू विल कम आउट विद ए स्मॉलर सेंटेंस ऑफ पनिशमेंट. पर अगर आपने मारने के लिए उसके पीछे गए हैं तो इंटेंशन और इमोशन दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब ज्यादा ग्रेव इंसिडेंट मानेंगे उसे, और फिर आपको सजा ज्यादा मिलेगी, है कि नहीं? दैट इज एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स. बाहर की दुनिया में जो हो रहा है उसको तो फेस करना ही पड़ेगा आपको, चाहे अनजाने में किया हो या जानबूझ के किया हो. अंदर की दुनिया आपकी साफ रहनी चाहिए. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. सो फोकस ऑन दैट. बाहर तो आपसे गलतियां हो सकती है. यस. ऑलराइट, वेरी गुड. अनदर वेरी पावरफुल discussion. I just wanted to keep it light, so I ended it here. But it's a very, very profound discussion, by the way. इसके बारे में हम 2 घंटा तो इसी पे डिस्कस कर सकते हैं, इसी सवाल पे. But I will not venture into that. Okay, good, very good, Vivek ji, good question. Yes, Apurva ji, you want to share something? मुझे अमित जी ने जो क्वेश्चन रेज किया था उसके बारे में मुझे जैसा ये पूरे डिस्कशन में फील हुआ, आई जस्ट वांट टू शेयर दैट. कि एक मेरा भी क्वेश्चन था कि ये हम कौन से कॉज का इफेक्ट है जो हम पर हो रहा है, वो हमें नहीं पता चल रहा था. हम राइट कॉज पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे हैं. देन an explanation came that whatever happens right now is sum total of a lot of earlier causes. It is sum total. It's not a single result of single cause. Correct. तो ऐसा मुझे महसूस हुआ. I felt that it is futile to try and pinpoint causes of what is happening to us right now. जो इफेक्ट है, जो हमको हो रहा है, वो इफेक्ट है. And to find a cause and to address that cause, that is a futile exercise. It is the best in our interest to accept it as it comes to us and not resist it. That is the only feeling that I got from today's discussion. Okay, good. That is a good understanding. Let's acknowledge that. But you can take it further. पहले तो एक्सेप्ट करोगे ही करोगे, so then you have to face the right situations with the right karma. अभी का तो पुरुषार्थ दिखा लोगे ही ना आप, क्योंकि सिचुएशन सामने है, उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद जो बेस्ट कर्म आप कर सकते हो वो तो करोगे ही करोगे. Yes, बिल्कुल. so that will take care of that situation. But the imprints which have created this have to be removed. तो उसके लिए आपको अपनी स्पिरिचुअल साधना पे वापस जाना पड़ेगा. यस. और as we were discussing, NLP के थ्रू आपके अपने न्यूरोपाथ्स को चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि कॉज तो वहां से आ रहा है ना. कॉज पिन पॉइंट बेशक ना कर पाओ कि कौन से इवेंट से, हो सकता है कि कई जन्मों के 15-20 जन्मों के 15-20 इवेंट से मिला के आपको आज का गुस्सा आ रहा है. करेक्ट. बट हैविंग अंडरस्टूड कि ये एंगर आ रहा है और मेरे अंदर है, तो काम क्रोध ये संस्कार तो हटाना ही है ना. या तो स्पिरिचुअल साधना से हटाओगे, या फिर एनएलपी के थ्रू आप पूरा का पूरा उस एंगर की फाइल को फॉर्मेट करोगे, डिलीट करोगे. देयर आर वेज हाउ वी डू दैट. यस. तो यू हैव टू गो फॉर सम काइंड ऑफ टेक्निक्स टू रिमूव दैट इम्प्रिंट. अंदर की दुनिया को साफ करना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली. एंड सर आपने उसके बारे में भी और एक थॉट मुझे ऑलरेडी दे दिया था, और संजीव जी ने भी उसके ऊपर बात करी थी कि बुद्ध पूर्णिमा आ रही है. Buddha's teaching is all there for not for any religious progression, or not more of spiritual progression as well, but of equanimity. Absolutely. So whatever you are feeling right now, if you are not if you are balanced towards that, not for it, not against it, if you are balanced in equanimous situation, right, that is the path to overcome your vikar. Absolutely. So that is what we need to practice. So practice silence, practice cleansing of your chit, practice whatever you want to do. Spiritual जो भी आपकी साधना है उसको पकड़िए और उसको फॉलो करिए, ताकि आपका चित
साफ हो सके। चित्त को शुद्ध करना ही हमारा काम है। Yes, all right. So we have already 8 minutes over time. So I'll close the discussion now, unless somebody has to share or ask any question. Final call. Anybody who wants to share or ask any question? Okay, good. Yes, sir. So with this, we come to the Hello. yes. On hand. One second. आज आपके डिस्कशन से आई एम ऑडिबल क्या? आज आपके डिस्कशन में मैंने जो रिसीव किया वो सिंपल चीज है। आपने दिया कि नहीं दिया मुझे पता नहीं, आप उसको कर देना। आपने जीने का मंत्र दे दिया अभी, वो मंत्र मेरे से सबके लिए सब सिचुएशन में अप्लाई होगा। वो सिंपल एक 3 वर्ड का वर्ड दिया, मंत्र दिया आपने, लव, पीस एंड जॉय। Any situation, any action, by your any action, if you can create a situation which is loveful, loving, peaceful, and joyful, whether it's external or internal, it adds to your life. It leads you to where you want us to lead in spirituality, or where spirituality tries to pull us. वहीं क्लीनिंग हो गया कि डेली बेसिस में अगर अपन इसी पे ध्यान दें कि वट एवर आई एम डूइंग, माई एक्शन शुड लीड टू लव, पीस एंड जॉय, then I think we can have a fulfilling life. Thank you, sir. Thank you for giving me this mantra. Perfect, great, wonderful sharing. And that is actually the takeaway for Buddha Purnima. हाँ, तो सब लोगों को यही प्रैक्टिस करना है, लव, पीस एंड जॉय की अगर एनर्जी बना लेंगे तो वी आर ऑल बुद्धास। हाँ, बुद्धा की लाइन में पहुंच जाएंगे। Great. So with this learning and this takeaway, I thank all of you for your great participation. Enjoy a great week, and we come again next week with another set of spiritual laws. Till then, Aham Brahmasmi. Enjoy, take care, bye bye, good night. सभी को नमस्कार। नमस्कार।